Do you feel stifled and trapped in your relationships? And this could be any relationship, really, with your parents, your siblings, your friends, your co-workers, your manager, your significant other. It could be anyone. And that's what makes it tricky. That is what makes it tricky, right? Because ये ऐसे लोग हैं जो लाइफ में तुम चाहते हो, you don't want to abandon them, you actually love them, but somehow there's something really off about it and you're feeling and carrying that frustration, and वो धीरे धीरे culminate हो रहा है, जो resentment and गुस्से में बन के निकल रहा है, and now there's just this huge resistance in your body. I remember this feeling very distinctly when my mom a few months back called me to come home and hang out with them, to spend some time with them. I really didn't want to. I felt such anger and resentment. And I was confused and guilty of why should I feel that way? This is my parents. They have loved me. They have provided me with everything. Yet I feel that for them. What was going on? And in this frustration, I talked to my cousin brother, and there was one question he posed to me. One question which really changed my perspective towards relationship, and it gave me a point of reference to go back to every time I had doubts in any context, like big or small, in my relationship. He asked me, what do you want? What do you want of this relationship? And I remember saying that I want authentic relationships. For me, it meant that we should be treating each other as equals. Like we are both humans on the same level, we both have the same level of respect and acceptance and love. And that was what I was struggling with my parents, because whatever the circumstances, without villainizing them, I need to say that they were incapable of giving me any kind of emotional support, which meant they didn't look at me as an equal. They looked at me as a child who's unable to make her decisions. And as an adult, as a 30-year-old adult, it's really frustrating. Because at one एक तरफ तो तुम बोल रहे हो कि तुम बच्चे हो, तुम अपना डिसीजन नहीं लेते हो, बट दूसरी तरफ मेरे से सारे अडल्ट वाले काम करने का एक्सपेक्टेशन है without even making a mistake. But that frustration aside, it was such an unequal relationship because they expected a lot of emotional support from us. कि उनको कोई भी problem हो रहा है, दुख हो रहा है, everything, we should be there for them. सब कुछ छोड़ छाड़ के, without any consideration, they should always be our priority. But in the same space, I was never the priority, not in emotional sense, right? So that was a very unequal relationship. I was very unhappy about it. And in that moment, I figured, okay, this is why I am unhappy, and this is exactly what I need to change. Which doesn't mean I'm going to go and try to convert them. I tried that. It didn't happen. लोग नहीं बदलते हैं. But चूंकि मेरा पर्सपेक्टिव क्लियर था, मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे चाहिए और मुझे यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, तो I did what I felt was right, which was pulling away emotionally from them. I still believe that I have an obligation and duty towards them, so I do not cut them out. Look, it's not going to look the same way. If you also have an issue with your parents, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा भी solution exactly ऐसा हो, तुम्हारा अलग हो सकता है, and that's the whole point. मैं तुम्हें नहीं बता रही कि तुम मेरा exact solution copy paste करो, because हो सकता है तुम्हारे लिए काम ना करे, हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ और necessity हो, and उस सवाल का जवाब तुम खुद ही दे सकते हो. तुमको बस ये सवाल का जवाब चाहिए, तुम्हें कैसा relationship चाहिए, and उसके हिसाब से तुम आगे का काम कर सकते हो. बट मेरे को ये समझ में आया कि मेरे को उनसे इमोशनली दूर रहना है, बिकॉज वो नहीं चाहते उस तरीके का रिलेशनशिप, एंड दैट वाज इट. इट ऑल्सो मेंट कि ये एक बार का तो था नहीं कि एक बार कर दिया एंड ओके काम धंधा खत्म. आई हैड टू डू दैट एवरी टाइम आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद देम, बिकॉज देयर एक्सपेक्टेशन रिमेन्ड सेम. दे डिडंट चेंज. दे स्टिल वांटेड मी टू प्रायोरिटाइज देम, बट दे रिफ्यूज टू प्रायोरिटाइज मी, एंड दैट वाज नॉट ओके विद मी. सो एवरी टाइम आई हैड दैट कॉन्वर्सेशन, एवरी टाइम मुझे गुस्सा आता था या मुझे कन्फ्यूजन होता था, मैं हमेशा ये याद दिलाती थी खुद को कि मुझे रियल रिलेशनशिप चाहिए. तो ये जो बोल रहे हैं सुनने में अच्छा लग रहा है या जो भी है, ब्लैकमेल और नो ब्लैकमेल, जो भी बोल रहे सेंस बनता है नहीं बनता, इट्स नॉट द पॉइंट. जो मुझे चाहिए वो ये है, और आप देने को तैयार नहीं हो तो हमारा इस लेवल तक ही बन सकता है. विच आई हैव टू से 30 साल से, ऑब्वियसली मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उनको जाती, मेरे पेरेंट्स हैं वो, 30 साल में इतना शांत मैंने कभी फील नहीं किया अपने रिलेशनशिप पे. इनफैक्ट in spite of the conflict as the society puts it, क्योंकि चूँकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रही हूँ, उनकी बात नहीं सुन रही हूँ, ओबीडिएंट नहीं हूँ, तो मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ. In spite of that being the narrative here, what has happened is I actually feel this is the best relationship we have had in years. Because now they are who they are and I am who I am. यहाँ पे कोई झूठ का pretentious नहीं है. वो भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, मैं भी जो कर रही हूँ अपनी शिद्दत से कर रही हूँ.
इवन दो हम लोगों को सेम चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बिकॉज हम लोग बस अपना अपना सच बोल रहे हैं ना, इतना सुकून का रिलेशनशिप बन गया इन स्पाइट ऑफ मी नॉट टॉकिंग टू देम एवरी डे, that I would prefer this over the last 28 years of that bullshit where I was behaving in the way didn't we yet feeling so unhappy and so unheard and so just unhappy. So that's the key, in any relationship. And look, sometimes it will not look nice. It will look like you're the villain of these stories. And I'll tell you, I will come up as villain of all these stories. मेरे parents के साथ, मेरे friend के साथ, मेरे exes के साथ, जिसके साथ भी देख लो, मैं हमेशा villain बन के आऊँगी. But let me tell you, I'm enjoying this one, and you will too once you come here. But the thing is, right now I am doing what feels right, विदाउट थिंकिंग अबाउट बाकी लोग क्या कर रहे हैं. एंड चलो ये तो थोड़ी बात की बात है, यहाँ तक आते ही नहीं है अभी के लिए. बस इतना करो, कोई भी रिलेशनशिप हो, जिस भी रिलेशनशिप में तुमको इशू हो रहा है, अगर तुमको एक रिलेशनशिप में इशू हो रहा है तो मेरी गारंटी कि तुमको बाकी सब में भी इशू हो रहा होगा, इवन इफ तुमने रियलाइज़ किया है या नहीं किया. बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम कर रहे होगे. तो अगर तुम्हें ये इशू हो रहा है तो बस एक सवाल का जवाब तुम खोज लो, और वो हमेशा एक स्टेटमेंट ही होगा. एक सेंटेंस ज़्यादा लंबा हो नहीं सकता, वो एक ही स्टेटमेंट होगा और वो हर जगह लागू होगा. मुझे मीनिंगफुल ऑथेंटिक रिलेशनशिप चाहिए, यही मेरा फंडा है रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में. एंड मैं इसी के हिसाब से सारे डिसीजंस मेक करती हूँ. यही तुमको गाइड करेगा, तुम्हारी गाइडलाइंस है. सो अगर तुम्हें भी ऐसा फील होता है अपने रिलेशनशिप्स में, तो बस अपने इस सवाल का जवाब खोजो कि तुम्हें क्या चाहिए. ठीक है.